हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेयोनीज, पिज़्ज़ा सॉस, ऑर्गेनिक ऑर्गेनो, बटर, पिज़्ज़ा बेस एंड टमाटो, onion. Now I am opening the pizza base. Now I am take the ghee and spreading some butter on the pizza base. spreading some butter on the pizza base. Now I am taking a plate. I am taking a pizza sauce. And I am take the plate. And I am take the mayonnaise. I am take this spoon. One spoon mayonnaise and two spoon mayonnaise. I am mix it very well. I am taking the chaat masala and I am spreading and mix it very well. And now I am Spreading this mixture on the pizza base. like this and like this. And now I am spreading the cheese in this pizza. Now I am take the cheese and this kaddukas, and now I am spreading this cheese in the pizza. Now I am
ready. Now I am going to put this pizza in the oven. Let's go. Now I am starting this oven. You can see this number. यहाँ ये पिज़्ज़ा वाला ऑप्शन है तो मैंने इसे क्लिक करा और ये स्टार्ट हो चुका है. देखिए ये पिज़्ज़ा बनने लग रहा है. ये देख सकते हो आप, ये इतना सॉफ्ट सिक रखा है. आप देख सकते हो ये बहुत यम्मी लग रहा है. ये बहुत अच्छे से सिक रखा है. देखो वाओ, सो यम्मी. मैं इस पे ऑर्गेनिक छिड़कूंगी. देख सकते हो आप ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनो मैं छिड़कूंगी इस पे. इसे अब मैं पीसेस में कट करूंगी. वाओ, दिस इज वेरी क्रिस्पी. चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है. वाओ, this is very yummy. अगर आपको मेरी पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा. थैंक यू. बाय गाइस.